हेलो दोस्तों, लेगालॉजी लाने में सबका फिर से स्वागत है। तबीयत थोड़ी अच्छी है नहीं, इस वजह से आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, तो कोशिश करते हैं। तो आज भी कुछ इंटरेस्टिंग केसेस है, जैसे कि हिजाब केस है और आपके राइट टू मैरी के ऊपर कुछ केसेस हैं। तो शुरू करते हैं आज के केसेस के बारे में। केस नंबर 145, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, ऑनरेबल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ऑनरेबल जस्टिस J.B Pardiwala. In this case, the Supreme Court held that economic weaker section reservation as introduced by 103rd Constitutional Amendment held constitutional by 3/2 majority. It held reservation on economic grounds does not violate basic structure. Case number 146, State of Jharkhand versus Shiv Shankar Sharma. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया U.U Lalit, ऑनरेबल जस्टिस S Ravindra Bhat, ऑनरेबल जस्टिस Sudhansu Dhulia. In this case, the Supreme Court held that Bonafides of PIL petitioners are extremely relevant consideration should be examined at the threshold itself. Case relates to filing of PIL in Jharkhand High Court against CM Hemant soren. Case number 147, P. Ponnuswamy versus State of Tamil Nadu. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया U.U Lalit, ऑनरेबल जस्टिस S Ravindra Bhat, ऑनरेबल जस्टिस Bela M Trivedi. In this case, the Supreme Court held that if some high courts on state government or union territories have delayed in adopting draft rules of criminal practice 2021, it cannot prejudice the right of an accused to receive the list of the statements, documents, material, etc. in the position of the prosecution. Case number 148, Shakil Ahmed versus Union of India. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस संजय कृष्ण कौल, ऑनरेबल जस्टिस अभय S Oka, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ. In this case, the Supreme Court issues direction regarding 1992 and 93 Bombay riots. Supreme Court holds state responsible for failing to maintain laws and order. Supreme Court directs compensation to victims under Article 21 of the Constitution. Case number 149, Employees Provident Fund versus Organization versus B. Sunil Kumar and connected cases. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया U.U Lalit, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया. In this case, the Supreme Court holds Employees Pension Amendment Scheme 2014 as legal and valid. Supreme Court holds condition for additional contribution by employees as ultra vires, the EPF Act. Case number 150, B.A. Umesh versus Union of India. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया U.U Lalit, ऑनरेबल जस्टिस S Ravindra Bhat, and honorable justice Narasimha. In this case, the Supreme Court commuted death penalty, taking into account illegal solitary confinement for around 10 years. Case number 151, Muhammad Arif versus State. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया U.U Lalit, ऑनरेबल जस्टिस S Ravindra Bhat, ऑनरेबल जस्टिस Bela M Trivedi. In this case, the court held that death penalty of Muhammad Arif affirmed by dismissing review petition. The cumulative effect of the aggravating factors and the mitigating circumstances must be taken into account before the death sentence is awarded. Case number 152, Esat Sifa versus State of Karnataka. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता, ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया. In this case, the Supreme Court gave split verdict in hijab case. Justice Hemant Gupta favored
the hijab ban, where Justice Dhulia set aside conduct a High Court judgment. That's why the matter is now placed before Chief Justice of India. Case number 153. रामनंद नंदलाल भारती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस J.B Pardiwala. In this case, the Supreme Court acquits man convicted for murder of wife and 4 children on the basis of precautionary investigation. Case number 154. People's Union of Civil Liberties versus Union of India. ये केस सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस बेंचेस के ऊपर में डिसाइड किया गया था. In this case, the Supreme Court held that no prosecution permissible under Section 66A of IT Act after Shreya Singhal case 2015. Court issued various direction to state and central universities against use of Section 66A. Case 155. Segment Service Private Limited versus Commissioner of Income Tax. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया. In this case, the Supreme Court held employers have to deposit employees' contribution towards EPF or ESI to avail deduction under Section 361 BA and 43B of Income Tax Act. Case number 156. मनोज कुमार तिवारी वर्सेस मनीष सिसोदिया. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस एस अब्दुल नाजिर, ऑनरेबल जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम. In this case, the Supreme Court held a minister or public servant can file a private complaint alleging defamation and need not follow the special procedure prescribed by Section 199 Clause 2 and Clause 4 of CRPC. Case number 157. Bengal Secretariat Cooperative Land Mortgage Bank and Housing Society Limited versus Alok Kumar. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस J.B Pardiwala. In this case, the Supreme Court held that the Constitution 1917 Amendment Act 2011 would not be applicable to the local cooperative societies, whereas the same would be applicable to the multi-state cooperative societies and the societies within the union territories as per Union of India versus Rajendra N. Shah case. Case number 158. Inayat Ali and another versus State of Telangana. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ. In this case, the Supreme Court set aside the High Court direction for DNA test of children in a matrimonial dispute, citing right to privacy. Section 112 Evidence Act protects children. DNA test cannot be directed as matter of course. Case number 159. New Nobel Educational Society versus Chief Commissioner of Income Tax. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हा. In this case, the Supreme Court held profit-oriented educational trust cannot claim income tax exemption. Education must be the sole objective. Section 10 of the IT Act exempts from the field of taxation certain classes of income. तो ये था आज के केसेस के बारे में. तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए. मिलते हैं अगले क्लास में.